नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सीरीज में 1853वें पड़ाव पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। We would like to communicate our regards with thanks for your active participation, cooperation, mentorship, blessings, everything you have given to Ayush Samriddhi platform. Thank you. Thank you very much for joining. I would like to communicate my sincere regards to Professor Kamini Dhimanji, HOD Department of Puti Tantra and Stri Roga, All India Institute of Ayurveda, Delhi, and Dr. Jitendra Varsakia, Assistant Professor in Chand Chaudhary Brahma Prakash Ayurvedic Institute, New Delhi. So thank you very much, madam, for being inspiration. I would like to communicate my sincere regards to Professor Agnihotri sir for his constant support every time. Thank you very much for joining, sir. And Vishnu Prasad Sharma ji, both have blessed us from last so many years. Thank you, sir, again. So without wasting much time, I would like to invite Professor Vishnu Prasad Sharma ji, ex-principal Government Ayurvedic College, Guwahati, for his welcome blessings. Namaskar. Good evening to everybody. Hari Om. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to AYUSH Samriddhi International Conference Series on Male Infertility, Clinical Experience, Purush Bandhatta. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Professor Kamini Dhiman, HOD, Department of Prostheti Tantra and Stri Roga, All India Institute of Ayurveda, New Delhi, as a coordinator and moderator. Namaskar, madam, and welcome you to this Ayush Samriddhi International Conference. Next, I want to welcome Dr. Jitendra Varsakia, Assistant Professor, PG Department of Kaya Chikitsa, CBPACS, New Delhi. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi International Conference Series. One second. I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to AYUSH Samriddhi International Conference Series on Male Infertility Clinical Experiences. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pavanji. Thank you very much, sir. So nice of you. I would like to invite Professor V.K. Agnihotri, sir, for his blessings, preamble, and then community. Professor V.K. थैंक यू प्रोफेसर पवन शर्मा जी। मंच पर उपस्थित सभी हमारे आज के अतिथि वक्ता लोग और हमारे सभी मनीषी और हमारे आज के IRES के सभी गणमान्य हमारे पार्टिसिपेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को प्रणाम है। और मैडम कामनी धीमान जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम आशा करते हैं वो स्वास्थ्य लाभ करके पुनः आ गई हैं और उनका गला भी अब ठीक हो गया होगा। बड़ी खुशी हुई। पिछली बार हम थोड़ा देख रहे थे कि उनका स्वास्थ्य नहीं था अच्छा। और हमारे आज नए जो हमारे गेस्ट स्पीकर रहेंगे डॉक्टर जितेंद्र जी, जो सदी ओम प्रकाश जी से जुड़ते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभी गुरुदेव प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी आ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है। प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब आ चुके हैं, निशांत शुक्ला साहब है, सभी को बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो आज विषय रखा गया, ये विषय पिछली वेबिनार के कंटिन्यूशन में ही है
हम जान रहे हैं पुरुष बंधत्व के क्रम में या मेल इनफर्टिलिटी क्रम में पहले हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शरीर रचना के बारे में जाना, फिर शरीर क्रिया के बारे में जाना, पैथोलॉजी के बारे में जाना, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स या डिस्टर्बेंस होते हैं, और अब जाके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तौर पर कि इस प्रकार के मरीज कितनी मुश्किल से एडमिट कर पाते हैं कि उनमें कुछ तकलीफ है या कमी है, उनमें सुधार की गुंजाइश है, और सिमेनोग्राम के पश्चात या और सारी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताने में संकोच छोड़ के वो सक्षम हो पाते हैं, तभी उनका सही ढंग से उपचार हो पाता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को सेटल होती है, और फिर उनको हिदायतें या पथ्य बताया जाता है, तो वो अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। तो इसी सब जानकारी को देने के लिए सर्वप्रथम हम प्रोफेसर कामिनी धीमान जी का, जो मॉडरेटर और कोऑर्डिनेटर है, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत भी करते हैं कि उनकी प्रेरणा से ही यह सीरीज भी चल रही है, उनके ही द्वारा मार्ग निर्देशित हमारे अतिथि वक्ता हुआ करते हैं। तो उनका भी स्वागत करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए बसव शर्मा जी को निवेदन करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कामिनी धीमान जी को सादर आमंत्रित करता हूं उनके विचारों के लिए। प्रोफेसर रामवीर शर्मा जी का स्वागत करता हूं, वो भी आए हैं। ही हैज बीन एबल टू जॉइन अस आफ्टर ऑल हर्डल्स। गुरुदेव लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं आदरणीय कामिनी धीमान जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार पवन जी, अग्निहोत्री सर, विष्णु प्रसाद सर, रामवीर जी और जो भी जुड़े हैं हमारे साथ आज, सबका स्वागत है। सबके साथ डॉक्टर जितेश, जो कि मैं बोलूंगी कि मेल इनफर्टिलिटी में एक हम जैसे बोलते हैं ना कि उभरते कलाकार होते हैं लेकिन एक्सीलेंट होते हैं, वैसे हमारा ये आप सुनेंगे इनके जो रिजल्ट्स हैं, इनकी ट्रीटमेंट है, जो मेल इनफर्टिलिटी में इनका काम है, इट्स रियली वेरी एक्सीलेंट। और मुझे लगता है आने वाले 5-7 सालों में एक बहुत बड़ा एक लीजेंडरी आइकन बनने वाला है ये हमारा जीतू, हम जीतू बोलते हैं इसको, हाँ उसी नाम से मैं उसको बुलाऊंगी। और बहुत इसका नाम भी है, काम भी है, बहुत लग के काम करता है, सुबह से शाम तक इनकी उपड़ी रहती है मेल इनफर्टिलिटी की। तो मुझे लगा कि हम इनका भी जो है लेक्चर यहाँ रखें, तो जिससे हमारे जो भी जुड़ते हैं सारे एक्सपर्ट्स, उनको इनके एक्सपीरियंसेस क्या है, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, क्या ट्रीटमेंट प्लान रहता है, थोड़ा वो शेयर करेंगे हमारे साथ कुछ केसेस। तो हमें भी उससे थोड़ा सा हमारा भी ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि मैं तो जनरली मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स काय चिकित्सा में भेजती हूँ या कई बार इनके पास भी भेजती हूँ कि हाँ ठीक है ये पेशेंट उस एरिया का है तो वहां जाके दिखा दीजिए, इनके पास भेज देते हैं हम लोग। तो मैं आमंत्रित करती हूँ, ओवर टू यू डॉक्टर जितेश वर्षाकिया। थैंक यू सो मच मैम, इट्स माय ग्रेट प्लेजर कि मुझे इतने बड़े विद्वानों के सामने प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात कोई मेरे लिए हो नहीं सकती। और दूसरी चीज है कि मैं रिस्पेक्टेड कामिनी मैम का बहुत ही आभारी रहूंगा कि एक शिष्य को यही चाहिए कि उनके गुरु उनकी तारीफ करें। तो ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, और आई थिंक इट इज माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मैम। Thank you so much, ma'am, for appraising my work, and thank you once again. Respected Pawan Sharma sir, Agnihotri sir, Vishnu sir, in your eminent presence, I am sharing my views on infertility. Also, you will gain some of knowledge about this eminent topic. I am sharing my slide. It is visible, sir. Pawan sir, it is visible. Hello. Not yet, not yet. Wait, sir. Please give me 1 minute, sir. Also now it is visible, sir. Your screen is visible. Yes. Yes, thank you, sir. So I'm going to share my knowledge on Ayurveda and male infertility, a clinical approach. जैसे I have heard that
the anatomical and physiological aspect is already covered, but briefly I am trying to share my views also on that. Then I'm going to the clinical part. The importance to know the subject. What is the importance of this subject? So in today's scenario, there is a big changes, especially the pathological changes seen in the seminogram and seminal parameter. 42% decrease in sperm count is notable quantitatively and qualitatively. In last decline, the proportion of the motile sperm declined by rate 0.6, and the 31% of male and 43% women. This is the ratio for the concerned sexual issues in the infertility. The male infertility, it leads to the erectile dysfunction, especially matches the age of each decade 40% right now. Whatever the ED is present as 17 year of age, right now is the among the 40% of age. Next, coming to the significant number of the men with ED reports mild to moderate symptoms like depression. If the depression is not treated, then the ED is represented into the infertility rates increase day by day. There is so many techniques right now available, but this is not affordable to common men or laymen. This is the reason why we have to explore the fertility and vital agents from the herbal sources is the prior subject of the concern subject of the today's scenario, and hope for the traditional medicine. There is a reference in our classics. अच्छा एक साखस निष्फल यथाद्रुम. Acharya Charaka has described the fourfold of the essence of life: dharma, artha, kama, and moksha. This is all our need for the offspring. Also told that the should not aim just having offspring, but should have supraja, healthy and strong offspring who are physically as well mentally fit and prove to be good citizen. This is the aim of Vajikana medicine, which are described in our classes, and we have to search the sources of the treatment of the infertility on behalf of that. The male's infertility have a risk factor like the age, clitorchizism, testicular hypertrophy, non-genetical factors, varicocele, environmental factors, occupational factors, testicular trauma, testicular torsion, iatrogenic factors, aging, testicular infections, unhealthy diet and lifestyles, pollution, and smoking like this etiological factor are involved in mainly male infertility. When, how, and why the male partner of the infertile couple should be investigated. This is the very important area. Full examination include the genetic test, testicular histology, or additional test on sperm is clinically oriented and or suggested after the result of initial investigation. There is a sum of point I have depicted here, how the clinical history of this type of person we have to proceed. Medical history, family history of the infertility is most important. Testicular trauma history, previous infectious history, iatrogenic factors history, endocrine diseases using of the anabolic steroid history, pubertal disorders, and occupational factor we have to confirm from the patient. Physical examination, we have to go for the anthropometric measures, androgenic BMI, testicular elevation like morphology, size, position, and mass is present testicular part. Also, we have to investigate it for the varicocele and hydrocele of this type of patient to rule out the some significant pathologies. Also, we have to the penis evaluation and gynecomastia. We have to examine patient physically for same. Next, ultrasound sonological test. We have to advise patient testicular evaluation, varicocele, hydrocele, and microlithiasis. Also, we have to evaluate. Sperm parameters. We have to ask patient for the seminogram. We have to look into the volume, total number, pH, morphology, motility, vitality, antibody, and viscosity. So this prior examination we have to search for the same.
This is the flowchart diagram and some of flow of history taking. We have to keen to endure our routine practice like men in an infertile couple. History we have to take, physical examination we have to do, semenogram we have to ask. After that, is there any no abnormality? Then end of investigation, no need of there. Is there any abnormality we have found? When refer to the male infertility specialist. This is the reason. We can include in Ayurveda phenomena also that the speciality of the Vajikarna or gynecology practice person, we have to refer this type of patients. Now coming to the history, includes but not limited medical illness and medications. We have to ask patient for the medications which previously we or he taken. Surgical intervention he have done, like there is a Bhagandara mentioned in our classics. The most common complication of the Bhagandar is sexual dysfunction. Till 1 year, we have to ask for the same to patient. Surgical sexual ability or limitations, we have to ask patient firstly. Cryptorganism, scrotal infection, we have to ask. Testosterone and anabolic uses, we have to also confirm from the patient. Lifestyle factors like obesity, smoking, this is the most important things. History of malignancy, we have to rule out that. Physically include the but not limited overall body habitus, obesity, muscular development, locus of the testes, duct structures like present or absent, spermatic cord, varicocele, hydrocele, we have to rule out. And then we have to advise the laboratories investigations like seminogram, hormonal assay, and genetic assay if we needed. There is a role of hormone. We have to mention that. Most important thing is hypothalamo pituitary axis. This is all depend on that. The hypothalamus, pituitary and deep pituitary, then the products of the testosterone by the testis is controlled by the pituitary gland. That's why testosterone causes the beard and body hair growth, promotes the growth of the prostate gland, contributes to male sexuality, causes the bone and muscle growth. Testosterone stimulates the cell which situated in the testis to produce the sperm, includes the sperm tubule and T cell and Leydig cells. This is the important the hormone assay. Now coming to the classical way. The Sudha Sukra Karma have mentioned in our classes like Garbhotpadan, fertilization, Praharsha, excitement and orgasm, Dhairya, psychophysiological daring, Priti, affection toward the opposite sex or sexual urges, Chavan, to secret, and Bala, psychophysical energy or strength. These all quantitative things I have depicted here. It directly related to semenogram and sperm analysis. That's why I have depicted here. In our classics mentioned the Sudha Sukra Lakshana is the Spatikabam Dravam Siddham Madram Madhugandicha Sukram Michhati Kechitu Tail Chodranibam Tata. This is the mention in the classics. Now coming to the disturbance in the Sukravas Sodas. In our classics, there is a quote is depicted that as seed is unable to germinate after vitiated by the season change, contaminated water, insects, fire. Likewise, Sukra Dhatu is also affected by the dosas and unable to perform its normal function. This is the reason. Now coming to the abnormality, first I have depicted Kshin Sukra. Kshin Sukra is one among the 8 type of the Sukra Dushti, and it is characterized by the decrease in the concentration of the Sukra qualitatively as well as quantitatively due to the vitiation of Vata and Pitta dosa. Mainly Vata and Pitta dosa, it is depicted, it is the mainly associated dosa which causes the Kshin Sukra, which we correlate with the nearby we depicted with the oligospermia. Taking consideration above information, the term Kshin Sukra seems to be analogous with the term oligospermia, a subnormal concentration of the spermatozoa in the penile ejaculation, like the semen, is the oligospermia. Nidan of the Kshin Sukra in our classes already mentioned. I have divided into the 6 factors like Aharaj, Viharaj, Mansik, conditions, others that which also affect the Sukravasta Dushti, Dravya Sevan, and miscellaneous factor which I depicted here.
The causes of oligospermia mentioned in our contemporary medicine, like acquired and congenital. Acquired is a systemic disorders, infectious disorders, vascular disorders like varicocele, and sexual transmitted diseases. Congenital includes the cryptorchidism and germ cell aplasia. In our classics, the Kshir Sukra Lakshana is mentioned in our classics, but I have divided into the 5 factors like Sarvadehagat, Darbalya, Brahma Pandu, Santisolla, Sthanik, Muksos, Timidasan, Rishon Vedna, Madhra Vedna, etc. Mansik, Stridves, Maithungat, Alpachesta, Maithune Asakti, Sukragat, Sukra, Avisharga, Chirat Praseka, etc. Now coming to the Samtrapti Vibhajan of the Kshir Sukra. First, whatever mentioned etiological factors or nidana in our classics, Nidan 7 is occur, it leads to the dos prakopa. Firstly, the vat and pitta dos, mainly known as the Shina Sukra. That's why it leads to vat and pitta dos prakop, leads to the systemic, leads to the Kshaya Sukra with systemic involvement or without involvement, both. Again, the Nidan 7, Dusya Saithalya, Dusya directly goes to Ras to Sukra Dhatu Vaishamya, or directly goes to the Sukra Dhatu Vaishamya, and it's impact the metamorphology of the Dhatu, mainly Sukra Dhatu, and leads to Shin Sukra or oligospermia. Again, Nidan 7, causative factor taken. It leads to Agnimandiya, it leads to Jatragnimandiya, it leads to Dhatuagnimandiya, it leads to Amatpatti, it leads to impaired Ahar Ras, it leads to impaired metamorphology of the Dhatu, mainly Sukra Dhatu, or Ras to Sukra Dhatu. Again, the Nidan 7 leads to Khavi Guniya, leads to Sukra Sotodushti, and it directly involvement in the Sukra Sotovahadushti, and it leads to Kshina Sukra without systemic involvement. There is the various condition abnormality depicted in our literature, like azoospermia, teratospermia, necrospermia, asthenospermia, hypospermia, hyperenespermia. This is the one research article I have published. It is about the demographic profile of the oligospermia patient in particular area of the Jamnagar. I have discussed ahead regarding this. The Nidan I have divided in Aharaj, Viharaj, Manas. Already we have discussed before the slide. Cause of male infertility, mainly urban lifestyle, age, poor nutritional status, excessive use of salt in diet, occupations, excessive use of the hot water, addiction and stress. These particular I have correlated with the Ayurveda causative factors. That's why I depicted here. Now we will discuss about the separate Nidan of the Shirshgra. The first one is Asatmyam Chasevanat. I have correlated with the addictions. Excessive use of the tobacco hampered the normal digestive pattern, resulting into the malnourished state, ultimately resulting into oligospermia. A study of the infertile evaluation in Indian men who were addicted to tobacco chewing has reported its use with the decrease in sperm quality. The study shows that nicotine causes the degenerative changes in a seminiferous tubule. Reversed by that altered general tubular architecture, it decreased the thickness and spermatogenic cell masses, and Sartori cell ovulation is done, and then thickened basal lamina leads to the oligospermia or any hampered in the sucravastosis. Cigarette smoke has effect on spermatogenesis, which may be due to the toxic substance in the cigarette or the histologic reactions due to the hypoxemia induced by smoke in a testicular region. That's why cigarette smoke etiological factor is most important. Socioeconomic status. Persons in the condition of the poverty eat less nutritious and cheaper food, which are usually vat provoking. It may causes the low level of the ras dhatu, and it leads to dhatu vaishamya. Ras to sukra dhatu is not nourished, and lastly it affects the sukra vahastota dushti. It is also noted that the malnutrition causes the hypogonadism, which lead to leading cell dysfunction, which leads to hormonal imbalance, and which leads to oligospermia. This is most important thing here. Now coming to next etiological, Ruksha Tikta Kasai Ati Lavan Amla Ushna 7. Excessive intake of the Lavan Amla Kshar and Nidan of the Sukravastodas, also mentioned in our classes directly. The study also reported that
low sperm count in the low salt diet, increase the abnormal sperm cell in a low salt and high salt. Both is more टीम low salt से भी abnormality होती है sperm की, high salt से भी होती है, as well as the oxidative stress in the epidermis of a both low salt and high salt diet. This suggests that the both high and low salt diet might play a negative role in infertility male rats. This is the experimental study. Tholia. In Ayurveda classics, the Acharya mentioned as Ashtonindriya Purus that Ati Sthul, obese person have difficulty in a intercourse. The term there mentioned is Kruch Vyavaita and diabetes or generalized diabetes. There is the Rasanimithemis Tholia mentioned in our classics. There is the disturbance in the metamorphosis of the Ras Dhatu. It leads to the disturbance of the metamorphosis of Uttrotas Dhatu. That's why it also leads to the disturbance in the metamorphosis of the Sukra Dhatu. Now coming to the age, mainly the age above 35 years of the age couples have a difficult to gain parenthood and unable to conceive. Problem with the diminished libido is there, erectile dysfunction is also there, obesity may cause comorbidities is there present, hormonal imbalance or due to the stress and other age related changes are also common is there. That's why the age factor is most important. Negative culture attitudes and myth can also interfere with the pursuit of the satisfying sexual activities among the older men and a woman, and it leads to the infertility in young age. Vegaghat kshataschapi dhatunam sampradushan. Vismagni and Vismasan, along with the disturbed sleep, it may lead to Vata Prahop and vitiated Agni, resulting into Amatpati, ultimately it's improper formation of the Dhatu and leads to the Shukra Kshaya. Very low caloric diet, we already discussed that. Low caloric diet is leads to the hypogonadism, leads to the dysfunction of the Leydig cell, leads to the dysfunction of the hormonal balance, and leads to the infertility, mainly male infertility. Sleep is the most important thing. Sleep curtailment has been shown to lead to reduce the level of the circular androgens. Sleep disturbance is directly due to androgens dysfunction. That's why sleep is playing the main role to maintain the homeostasis of the endocrine regulation. Sasakshara Ati Ushna Sevanam. The bath habits and the occupation we can take here. Study have reported that the regular use of the hot bath or sauna bath causes the temporary infertility as it impairs spermatogenesis. Occupation, it is believed that workers who are working in a hot temperature zone are more prone to testicular hypothermic changes. Further, a decrease in a sperm output in testicular hypothermia has also been reported. These are the cause. There is the one thing I want to highlight. The testicle of the men cannot function properly if the testicular temperature is hotter equal to the temperature of the body. That's why the testicular part is outside our body. If the testicular temperature is raised 98 degree, sperm production is hampered. And the exposure to heat usually take at least 3 to 9 months for sperm to be able to function normally again. That is the important thing, the Ushna, hot temperature. Narina Marasagnata. Sexual desire is related to three factors. Partners who use the degree of the sexual desire experience early in a relationship as a standard of the comparison may label as a problem. The drop in a sexual desire and activity that often accompany long-term partnership. That's why the Narinam Arasagnata is the most important factor also for the sexual desire as well as the coital activities. Ati Vyayam. Patients who are doing a heavy physical exercise like a daily lifting of a heavy weight or working under the direct strong sun heat bath, all these factors may lead to the Vatpit Prakop, it leads to the infertility, it leads to the Sukrakshaya, Chinta Sokadi. Psychological factors have been listed as a cause of ajina. Ajina leads to the disturbance of the metamorphosis of the dhatus. Mainly Ras Dhatu leads to Trota Dhatu metamorphosis is hampered and it leads to Sukra vascularity leads to the oligospermia. Now coming to the clinical experiences which I have gained. Firstly, I emphasize on my thesis work, whatever I have done. A clinical study to evaluate the role of Falagrida in a management of the oligospermia.
In this study, I administered the Falgrit. Before the administration of the Falgrit, we have classically done the Virachan with the Haritakad Yoga. Why Haritakad Yoga we have selected? There is a depicted in a Rasayan chapter. It is already mentioned that the Rasayan and Vajikarana drug can administer prior to Sodhan. That's why this thing, Falgrit, I have prepared myself. This is the picture of the Falgrit and process of the Falgrit. What is the diagnostic criteria? I have taken the 15 million per ml, which is the standard diagnostic criteria of the WHO for the oligospermia. I have investigated for the seminogram, serum FSH, testosterone, and root and hematology parameters. This is the Virachan procedure I have depicted, like Snehapan with done with the Falgrit, then Vasvedan, then Virachan Karma with the Haritakad Yoga, then administer the Sansajan Karma according to the Suddhi, then I administer the summon drug like the Falgrit. There is the two group is there. There is the subjective criteria. Subjective is the sexual desire, and rigidity, all. And the objective is the seminogram, FSH, LS, testosterone. Main thing I want to highlight this one. The effect of the seminal parameters of the drug is depicted here, that the improvement in the sperm count of the Falgrit group 66.07% is there. The improvise in the sperm motility in Falgrit group, there is a 45.19 is there. The improvement in the normal sperm of the found is 15.73% in a Falgrit. The decrease in the abnormal sperm form is 40% in a Falgrit group, and the volume of semen increase in a 43.12% in a Falgrit group. So this is the effect of the Falgrit. Improvise the semenogram parameters. Also, it is the improvement of the serum FSH and testosterone was there. This is the result before treatment and after treatment of the sperm count. 66% improvise seen in a Falgrit group. The also there is a one of the other paper I have published, the efficacy of the Virachan followed by co-grit. Plain grit also is much helpful to increase the sperm count relative to the Falgrit. So I have done the research work on both Falgrit and go-grit. Go-grit also the giving the best result and good result. This is the one case summary I have case study I am present, that effect of the Falgrit in the management of Kshinisugra oligospermia case report. Here is the case. There is a 30-year healthy male patient visited in our OPD. The couple were married and were unable to conceive even after having 6 years of his or her married life. The semenogram report is the 13 million per ml report was there on the sperm count. We have managed with the Virachan procedure followed by the Falgrit 10 ml once a day with milk and sugar for 2 months, and the result we have gained. Patient decision was the inquiry. His complaint was the post-tech exhaustion, ejaculation, and body aches there. Patient came from the urban area, work under the extreme hot temperature. In addition, he was in the habit of the taking excessive salt and spice in routine light diet. He was irregular in regard of the food intake and irregular bowel pattern is there. Patient addicted to tobacco chewing. Before coming to his hospital, he had never been managed for this condition. Not any taken medicine he was taken. The female partner was also having no history of any irregularity of the menstruation or any hormonal imbalance. The male factor is main here. The patient decision is there. Patient physically generalized build, fair nourishment. Patient had normal size and shape of the penis, skin texture of the penis are normal. In only session, no hydrocele or varicocele was found. Only the 30 million sperm count is there. Motility is 55% and 10% sperm was abnormal in a form. So here is the clear-cut oligospermia patient is here. We have given the Virachan karma same as I have depicted in the Falgrit with the Falgrit. Snehapan given, Dipan Pachan we have given, followed by the Snehapan, followed by the Abhyang Swadan, followed by the Haritakyadi Yog Virachan, and followed by the Sansajangram. Then we administered the Falgrit with the proper diet and lifestyle we have advised to the patient. The result is here.
Before the treatment, there is the sperm count is 5 million. Sperm count is 30 million. After the treatment, after the Virachan with the Hartika Yog, the count is 82 million. And after the 2 months of the Falgrit administration, the count is 95 million per ml. This is the efficacy of the Falgrit in this case study. This is the report of the patient I have depicted here. Second one is the effect of Falgrit in the management of the Kshin Sukra. This I have already published in one research article. What is the role of the Virachan in this type of patient like the male infertility? It is thought that drug which are administered after the Sodhan provides the better and quickly effect, as Sodhan has to enhance the bioavailability of drug. It's opening the channel. Though all the Sodhan procedure are advocated in Sukra Dusti to improve the quality and quantity of the Sukra, but for the present clinical, this is the Virachan of selected specially. Discussion on that. There is the ingredient of the Falgrit. I described one by one. Gogrit, Kaugi, and Satauri having the Madhur, Snigdha, and Sit Guna, which similar to Sukra Guna, quality of the Sukra Dhatu. Gogrit, Aswagandha, and Yashtimadu, also having the same property. There is the Satauri, aphrodisiac action was there. There is the presence of the Sataurin is there. Boost the hormonal stimulus, boost the hormones, stimulate the and increase the hormonal secretion. Gogrit is the source of the minor constitution of the androgenic hormone, activates the androgenic hormones with a few minutes after the administration. This is the power of the Goduk and Go milk. Zinc play a Falgritem also zinc particle is there. Falgritem play a important role to activate the seminal plasma, important for the sperm motility. Calcium related to the morphology of the sperm and related to tail is mostly important. And Falgrit overall doing the retardation, improves the retardation of the growth and hypogonadism. We can administer that. Vidarikan uses as a reproductive tonic. Ashwagandha uses a raised testosterone and luteinizing hormone. There is the Trifla, right? Trifla, Kusht, and Yashtimadu, the three other ingredients here. Trifla is the Rasayan. Sarvadhatu Pushtikar gun is there, Trifla. Kusht is the Sukra Sodhan gun have. Sukragni Vardhak gun also have the Kusht. Yashtimadu have the Rusya and Sukragni Vardhak gun is there. And all these combinedly effect like Sarva Dravya Sukra Vridhikara. That's why it is the beneficial in a oligospermia. This is the mode of action of the Falgrit, which I have tried defeated as my knowledge. This is the mode of action of the Grita. Madhuras is there, Sitvirya is there, and Snidgun is there. Madhuras leads to Pitta Vatsaman, Sitvirya leads to Pitta Saman, and Snidgun leads to Vatsaman. The most important dosa in oligospermia is Vat and Pitta. That's why this is the important Rasgun Virya is for the improvise of the semen quantity. Sukragat Pitta Vatsaman, and it leads to Sukragat Dos Nasan Guna. Now coming to the next case study, management of Akshini Sukra in Ayurveda prospect, a case report. There is one more case I have. 34-year-old healthy male patient visited in our OPD Gai Chikitsa. There is a 7-year married life is there. The patient was managed by the Virachana, mainly followed by the Tritiya Baladi Yapna Basti for the 21 days. First I have administered the Virachan Karma, then I given the Tritiya Baladi Yapna Basti. Then we have administered the 4 months of the summon dose. This is the case of azoospermia. Look, patient detail. The patient had 8 years of the marital life and active normal coital activity without any contraceptive use, unable to conceive a partner 7 years. This is his history, but the partner have no any other abnormalities there. He have habit of the smoking since 5 years. He inquired the patient was having extra salt and diet, oily, spicy food. By occupation, patient was working as a sales manager. His shifting duty is there. Here is the shifting duty. There is the doing the Apan Vayu Dushti.
shifting duty is very effective on the Stoto Dushti, like the Puriswas Totos leads to the Vayu Dushti, and it leads to the Sukra Artav Vaiguniya. Those Vaiguniya. Patient detail is here. Patient did not any past medical history of the mom's gonadal trauma, organism, hydrocele, etc. etc. Patient did not have any history of the surgical procedures also done. No other parameters except sperm count, morphology, and motility was altered. The patient was advised analysis of the semenogram for the further rule out of this azoospermia. We have done the report 3 times. Patient same report of the zero sperm count. Then we started the medicine. Now coming to the case summary. Patient we have married in 2012, unable to conceive her partner since 6 years. Then repeatedly clinical and endocrinological examination of the wife was done and found normal. Then in 19 September, patient visited our OPD, in my OPD. Then in patient investigated for the semenogram, we found the zero sperm count. We started initially for the Virachan Karma. Patient we have advised patient to do this. We advise for the Deepan Pachan and Snepan with the Falgrid, and we given the Virachan with the Trifla Quach, Manaka Quach, Trivtavle, Madhya type of Sudhi was there, 18 Vega patient came. We followed the Sansanjan as per the Sudhi. Then we administered the Tritiya Baladi Yapna Basti for 21 days. The administration of summon drug, we are choosing the Aswagandha, Bala, Kapi Kachu, Amla Ki Churna, Yastimadhu Churna, equally with the 1 cup of milk morning and evening before the food. Before food is important because there is Apanvai Gunya and Sarandhar depicted there. In Apanvai Dusti, the drug should be administered empty stomach. Yeah, either early morning, empty stomach. That's why we administer the medicine upon empty stomach for the same. Then the patient is reported, and patient report is found that here is the report. There is the patient report was a nil. Again, we have given the Virachan. That time of the patient of the report nil. Then we given the Tritiya Baladi Yapan Basti, and last we given the 4 month of course. And that time patient was reported with the 68% million count depicted. Here is the report I have depicted here. Mode of action of Yapna Basti. How Yapna Basti work? Yapna Basti is specially indicated in the Sukra Dos and Klebia in our Charak Siddhisan chapter 9. Basti therapy is specially designed to treat the Vat Vikara. Here we take on the Apan Vayu Dusti. That's why I have depicted the Basti therapy. Basti by expelling the out of with Slesma, Pitta, Anil, and Mutra. These 5 elements are detoxified by the Basti therapy. Acharya also specially mentioned the Basti Karma for the Sukra Dhatu. Therefore, the drug are administered the Basti are enhance the quality and quality of Sukra. Yapna Basti is the very keen for the Bruhan therapy. That's why I chosen the same. The line of treatment of Kshen Sukra should be based on the Brihan Chikitsa and Russia drug having a Sukra Vridhikar property. That's why we chosen the Yapna Basti. Yapna Basti is said to possess the best Bruhan and science. Tritiya Baladi Yapana is selected, which is the particular indicated in this type of condition, especially in a Sukra Dos and Sukra Vas to speak. Sorry. What of the Aswagandha? Aswagandha effectively to remove the free radicals as assessed by the reducing level of the various antioxidants and improve the level of the diverse antioxidants. The level of the testosterone, LH, FSH were increased by the Aswagandha weekend. The Acharya Charak indicate the Aswagandha drug in the Balya and Bruhan drug. That's why we use for the Russia as a Russia and Rasan effect. Kapikachu have established to enhance the sperm count and motility because the L-dopa is there and L-dopa directly affects the motility. Yastimadhu was the found enhance the quality of the semen. So where we need the bulk of the sukra is the Yastimadhu. The Chandraprabhati we have administered. The potential of the Chandraprabhati is Madhur Ras, Guru, Snake, the Gun is there, Sit Virya is there, Rasayan Gun is there, Rusya property is there. In case of the Kshen Sukra, Vat Pit Har Karma is very useful to treat the Kshen Sukra. That's why the dosa, Vat and Pitta
primordial in this disorder. So we have to choose this type of drug who who decrease the vat and pitta dosa vaishamya. It is known to utilize the mutra vasatas, and also it is very useful to sukra visarga. Also, study reveals that the administration of the Chandraprabhavati act as spermatopoietic agent. Chandraprabhavati is a spermatopoietic agent. So we have chosen the Chandraprabha. Also, we have administered the Falgruta. I have already discussed regarding the Falgrit previously in another slide. Next, coming to the efficacy of the Amla Kichurna in the management of the oligospermia. The same case as I have here, Amla, I have administered the plain drug as Amla for the treatment. I am directly coming to the mode of action of Amla. Amla have a Guru Gun, Sitvirya, Vrishya Rasayan, Pitta Vasamak Gun is in Amla, Sukragat Pitta Samak Amla do the, then it leads to the Sukra Dosnasak and do the Sukra Vruddhi. In a modern point of view, Amla have a quercetin, act as a ICHS which stimulate the leading cell. Leading cell is most important to produce the testosterone hormone. Act as a FSH which stimulate the Sertoli cell to synthesis the androgen and binding protein, and it leads to the testosterone enhancement, and it leads to the increase the testosterone level and development, and the maturation of the sperm is leads by the Avla. The cause of the infertility we can demerit. Next is the role of Aswatha Phalichuna and Aswatha Lanuphavisara. This is also one study I have done. Now coming to our next case study on varicocele or epidemic cyst. This is most important thing I have to depict here. This is the clinical study. The efficacy of the Virechan I have seen on 100%. How Virechan work on oligospermia with the Haritikad Yoga. I have this study. Already it is published in a UGC approved journal. The mode of action of the Virechan I have already depicted previously. I am coming to the clinical study of the epidemic cyst is here. If okay, here is not that study is here. That's why I am not. Okay, directly coming to the normal Chikitsa principle of the Sukra dosa. There is the Vajigana Yoga we can administer. There is the Rakta Pitta Har Chikitsa given in our Charak Samhita also depicted there. There is the Sitvirya Madhurgas Yukta Dravya is there. So we can administer that or that Dravya also in a Sukra Soto Dusti. The drug which mentioned in the Yoni Vyapad it is also useful in a Sukra Dos Vaisamya. Though that's why we can advise patient that drug also. The use of Jivani Agrita, Chavanpras, Silajit, Retnodos, these drugs are doing the rasayan effect, and it is tonic for the sukravastatas. That's why we can use it. Sukrados common treatment is like this type. The charak is basti is the most important. That's with Archikis I have already repeated. Astaman basti we can also mention. Nidan Parivajan we have to do because the etiological factor is most important thing is here. So we have to first do the Nidan Parivajan, then we go to the Sansaman Chikisa, and then we go to the Sansadan Chikisa for the avoidance of the this type of the dosa. The Pathya depicted in our classic is like this one. Shir, Dadi, Grit, Vasa, Maja, Masra, Siksu, Good, Sakra, Madhu, Masa, Godum, Khajur. Whatever clinically we can advise, we have to advise this. I always advise this. We have to the patient for to follow. And the Pathya I have in a present scenario prepared that avoid smoke, avoid alcohol consumption, avoid excessive spicy, oily, salty food, should not take warm water, excessive cycling should be avoided because the risk factor for the varicocele or hydrocele. Should not wear a tight undergarment. It hampers the mechanism of the spermatogenesis. Avoid the excessive mental stress because it leads to the sleep curtailment or psychological disturbance. Do what to do? Should take the more fruity, more green vegetable, more pulses in diet. Pulses is important for the protein because protein is important for the DNA synthesis, and DNA synthesis is most important for the spermatogenic enhancement.
excessive use of the carrot, soya, bean, rice, corn, almonds, spinach, milk, and milk products. How to advise the patient should take vitamin B12 and vitamin C enriched diet. Always, I ask patient to take the vitamin C of the diet. Use of the garlic and onion is most important. They contain the zinc part, and zinc is the most important for the motility of the sperm. Should massage twice in a genital area. It leads to the local blood circulation, enhance the circulation, and it helps to the demerit the erectile dysfunction, and it also helps to the blood circulation, leads to the spermatogenesis enhancement. Try to suggest patient to be happy in routine life, because happy harmony with the partner is also one like one sattva of the chikitsa of this type of patient. So I have advised this all investigation to the patient. So this is some of the articles which I have published on this particular topic, and I have depicted in last this 7 to 8 slide. There is no need to discuss. So this is the clinical practices which I have doing in my practice. I have tried to elaborate here. Hope you gain some of knowledge. This is the some of my work I have depicted, and some of I already done but not published it. That's why I not depicted here. And thank you so much for the this really interactive webinar. And thank you to organizing team, especially the Dr. Kamini Dhiman ma'am, Pawan Sarma sir, Vishnu sir, and Agnihotri sir. I am very thankful to you that you giving me the chance to share my views on this great platform. Thank you so much, sir. Excellent, Dr. Jitendra. Excellent. Excellent. No doubt, excellent. Madam Kamini ji was appreciating you. You are really gem. Thank you, sir. Thank you, sir. Kamini madam. Dr. Kamini Dhiman ji, are you comfortable? Agnihotri sir. थैंक यू प्रोफेसर पंक शर्मा जी, और लॉट ऑफ थैंक्स टू डॉक्टर जितेंद्र जी. रियली जैसा कि मैडम कामिनी धीमान जी कह रही थी, एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन था और बहुत ही कवर किया इन्होंने. बहुत डीपली इन्होंने सारे ग्रंथ से बताया, और महत्वपूर्ण बात रही कि एक एक पॉइंट को कि क्या कुछ हेतु हो सकते हैं, उन सब पर विशेष से प्रकाश डाला. चाहे वो वेग विधारण कर रहे हो, चाहे इंडाइजेशन कर रहे हो, चाहे लैक ऑफ स्लीप कर रहे हो, बहुत ही डिटेल से. और चूंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था तो अपने उन्होंने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, और विशेष रूप से मधु, घी, मिश्री इनके लंबे समय तक उपयोग करके जो सप्त धातु निर्माण के लिए कहना चाहिए सहायक होना चाहिए, वो कार्य करके दिखलाया. और हम समझते हैं चौधरी प्रकाश में इनका जरूर झंडा फहर रहा होगा, ये बहुत अच्छे से कर रहे होंगे. और मैडम ने जो कही उससे ये बात और पुनः प्रमाणित हो गई कि वो स्वयं भी अपने यहाँ आए हुए केसेस को अय्या से, दिल्ली से इनको भेजती हैं. इससे बड़ा किसी एक शिष्य का अचीवमेंट क्या हो सकता है, और इन्हें सक्सेस मिलती है. तो बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बधाई. आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू मैम सर. तो दिस इज ए गुड ओबीडिएंट स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स. कामिनी जी, आप कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा इसे पूछना भी था और अपना व्यू भी बताना था कि जैसे हम, मैं तो जनरली भेजती हूँ, लेकिन समटाइम जैसे पेशेंट्स मेरी होती, नहीं मैडम हम नीचे नहीं जाएंगे, आप ही लिख दो. तो एग्जामिनेशन करवा के तो हम लिखते हैं कुछ मेडिसिन, या तो लिखवा के आती, फिर हमसे लिखवाती हैं. तो जनरली ये तो चलो विरेचन वाला सारा प्रोसेस हो गया, आपने किए केसेस में विरेचन. तो सिर्फ अगर शमन देना रहता है तो प्रोटोकॉल कैसे आप डिसाइड करते हैं पेशेंट में, मतलब वो थोड़ा सा मुझे. हाँ मैम, इफ वी हैव टू डू द ओनली समन, तो जैसे सर मैम क्लासिकली फॉलो करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें पहले ही रसायनवादी का चैप्टर में डिपिक्टेड है कि प्रायर शोधन कंपलसरी है. जब तक स्वतः अवरोध दूर नहीं होगा ना, तब तक जो हमारी मेडिसिन है पर्टिकुलर काम नहीं करेगी.
तो उस टाइम पे मैम हम मृदु शोधन शोधन एडवाइस कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट है एरन तेल। एरन तेल क्या है, एरन तेल का गुण है वो रुष्टीय वात हरणम है, तो वात को भी डिपिट मतलब डिमेरिट करता है, तो अपन वाली शुद्धि भी होती है, और जो हमारी रुष्टीय प्रॉपर्टी का गुण है वो भी आ जाता है। एक मृदु शोधन करवा देते हैं तो भी हमारा शोधन का पर्पज फॉल हो जाता है। देन भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शोधन हो जाने के बाद, अनुलोमन हो जाने के बाद हमको फिर उसको ग्रोहन ट्रीटमेंट पे ले जाना होता है। फिर अब कौन पे डिपेंड है मैम, जैसे कि सिमेनोग्राम में अगर स्पर्म काउंट डिक्लाइन है तो वी गो फॉर द ब्रूहण चिकित्सा एंड रुष्य चिकित्सा। अगर मोटिलिटी डिक्लाइन है तो फिर हम मोटिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, तो उसमें कपी कच्छू है, एकांकित रस है, नवजीवन रस है, कुपीली की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी है मोटिलिटी को एनहांस करने के लिए। अगर बल्क फॉर्मेशन में दिक्कत है तो बल्क के लिए विदारी कंद है, फिर अश्वगंधा है, शतावरी है, ये बल्क फॉर्मेशन में अच्छा हेल्प करते हैं। देन पर्सेल इज देयर, तो शुक्र शोधन गुण के जो द्रव्य है जो चरक सुदर्शन 4 में दिए हैं, उसको हम शुक्र शोधन गण के द्रव्य को यूज करके पर्सेल्स को डिमेरिट कर सकते हैं। इज देयर एब्नॉर्मल फॉर्म इज देयर, तो हमको शुक्र शोधन और शुक्र प्रवर्तक वाले जो भी द्रव्य है वो यूज करना चाहिए। उसमें एक बेस्ट मैंने जो देखा है मैम, सालम पंजा पंजा का अच्छा गुण है, वो एब्नॉर्मल फॉर्म को बढ़ाने में सबसे अच्छा हेल्पफुल रहा है। ये सारे हो जाने के बाद भी अगर हमको कोई पेशेंट को कंटिन्यूस मेडिसिन देनी है तो हम समन डोज में फलग्रेस उसको दे सकते हैं मॉर्निंग में डेली। और शोधन के लिए उसको पिपली, अगर अगर उष्ण तापमान नहीं है, अगर समर नहीं है, इधर विंटर चल रहा है, तो उसको पिपली हम वर्धमान पिपली का एक प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे उसका शोधन भी होगा। पिपली itself is a Rushi also, and Pipli is also शोधक गुण also there. So we can choose this type of treatment as per the investigation what we seen, और जो भी सीमेंट के जो एब्नॉर्मल जो पैरामीटर्स हमको मिल रहा है उसको एक एक में नलीफाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक्सीलेंट, मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर हम सीमेंट एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी फाइंडिंग हम क्या क्या इसमें देखते हैं, जैसे मोटिलिटी कम है तो क्या, काउंट कम है तो क्या देंगे, ऐसे हम ऐसे देख के ही तो देते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें दो पॉइंट और आते हैं जिसमें कि एग्लूटिनेशन समटाइम्स प्रेजेंट मिलता है ना। एग्लूटिनेशन के लिए तो शोधन करना ही बेस्ट रहता है। हाँ, और दूसरा आपका कोई में एक्सपीरियंस हो तो प्लीज बताइए मुझे, तो मुझे भी थोड़ा ज्ञान। दूसरा फ्रुक्टोज रहता है, तो उसमें फिर हम कैसे करते हैं ऐसे? फ्रुक्टोज में मैम फिर हमको ना जो मधुर रस प्राधान्य गुण वाले जो द्रव्य है ना वो यूज करना चाहिए। उसमें मैंने जहां तक देखा है ना, अश्वगंधा यष्टि मधु का कॉम्बिनेशन भंग भस्म के साथ करना चाहिए, क्योंकि अश्वगंधा यष्टि मधु में नेचुरल स्टीरॉइड के साथ मधुर स्निग्ध गुण उसमें प्रोफिशिएंस है, और भंग भस्म है वो ओवरऑल मतलब फ्रुक्टोज को जो प्रोडक्शन करवाने में, एनहांस करवाने में हेल्पफुल रहता है। यस, वेरी नाइस। एग्लूटिनेशन जब रहता है ना तो मेरी प्रसाद सर से भी एक बार लंबी डिस्कशन हुई थी काफी देर तक, वो भी इस पे काम करते हैं काफी सालों से। तो जैसे उन्होंने भी डिस्कस किया थी कि एग्लूटिनेशन जब रहता है तो हम जनरली क्या सोचते हैं कि वहाँ कफ है, कफ नहीं सोचना है, पित्त की वजह से एग्लूटिनेशन होती है, वो उनका मानना है। Yes, ma'am. That's why we repeat yes, yes, likewise you also told that कि उसमें हम एक और पैरामीटर है मैम, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इज देयर, उसमें हमको पूरा का पूरा पंचकर्म करना है। मैंने एक पेशेंट का किया था, उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन था, मैंने पूरा उसका क्लासिकल स्वेदन वोमन विलेजन बस्ती से लेकर सब किया। राइट नाउ पेशेंट इज नॉर्मल मैम, उसका डीएनए फ्रेगमेंटेशन रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। या वेरी गुड। और एक तुम्हारा एज़ोस्पर्मिया वाला पेशेंट जो कंसीव हुआ था, मुझे थोड़ा उसके बारे में भी जानना था। हाँ, उसको मैंने उसमें और कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं थी मैम, मुझे जहाँ तक तो लग रहा था, क्योंकि ओनली स्पर्म काउंट इज नील, मोटिलिटी इज नील, ऑल सीमेन पिरामिड इज नील। उसके जो अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें वेरिकोसिल हाइड्रोसिल नहीं था, उसका मैंने बायोप्सी करवाई तो बायोप्सी का रिपोर्ट भी उसमें कुछ नहीं आ रहा था। तो दैट्स व्हाई आई हैव एडमिनिस्टर्ड द विरेचन कर्म देन गिवन द तृतीय बलादियापना बस्ती, क्योंकि तृतीय बलादियापना वाली डायरेक्टली सिचुएशन में डिपिक्ट है
कि वो वृष्टि है और ब्लोन प्रॉपर्टी, उसके सारे ड्रग है वो ब्लोन प्रॉपर्टी वाले हैं। या वेरी नाइस। अभी मैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है उसमें डॉक्टर अभय ज्वाइन किए हैं, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से पास जी आउट मैम। है, उनका भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो अगर अभय कुछ अपना ऐड करना चाहे तो वो भी बोल सकते हैं। अभय। ये हम पे यस हैं, यस अभी प्लीज, यस। 5-7 मिनट हैं। यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ नमस्कार। हाँ। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर का रहा और सर ने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। सर ने अय्या में भी अपना एक लेक्चर लिया था, इनफर्टिलिटी, जब हमने वर्कशॉप हुआ था वहाँ पर, तो सर ने वहाँ पर भी अच्छा प्रेजेंट किया था और अच्छे केसेस सर ने डिस्कस किए, जिससे कि हमें बहुत हेल्प मिलती है ट्रीटमेंट में आज भी। और जो है काफ़ी पेशेंट्स जो हैं हम देखते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया के रहते हैं, एजोस्पर्मिया के रहते हैं। तो एजोस्पर्मिया में थोड़ा मैम हमें रिजल्ट बहुत देर में मिलते हैं, कुछ जैसे कि प्राइमरी केसेस होते हैं उसमें तो नहीं, सेकेंडरी केसेस में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है मैम। तो ज़्यादातर केसेस हमने जो देखे हैं ओलिगोस्पर्मिया, मेरा टॉपिक भी रहा है क्षीण शुक्र, एक्चुअली पुत्रंजीवक घृत पे मेरा रिसर्च चल रहा था। तो अभी मैं वो होल्ड पर है, लेकिन जब तक जितने पेशेंट मैंने अभी देखे हैं तो पुत्रंजीवक घृत भी मैम अच्छा काम कर रहा है उसमें, और जो है अच्छे पेशेंट को रिजल्ट मिल रहे हैं उसमें भी। तो ये मैम अभी तक जो है मैं जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। हाँ मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे पास ही जी पेशेंट मैम। अपने भेजती थी। जी मैम। और जी मैम। दूसरा जितिन, मैं अभी थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस थोड़ा बताऊंगी यस कि मैम प्लीज, यस यस जो यस वट जटा रहती है ना, वट जटा लंबी लंबी यस जो यस जटाएं मैम, रहती हैं, यस मैम। उसका चूर्ण का भी इसमें है, काफी अच्छा रिजल्ट है। उसका मैम मतलब फर्स्ट सेल होता है तब उसका अच्छा रोल है वो, वट जटा का और ये बोधि वृक्ष कसाई का। हाँ हाँ, देयर इज अ फर्स्ट सेल, अगर फर्स्ट सेल इंक्रीज आ रहे हैं ना तो तब उसका बहुत बढ़िया रोल है। हाँ, तो उसका भी रिजल्ट मिलता है, मतलब इसमें यस तो मैम, अगर यस यस हाँ डेफिनेटली। हाँ हाँ, थोड़ा उसका भी कर सकते हैं, मतलब हाँ। हाँ मैं ट्राई करूंगा मैम, आई विल डू। जी जी जी, उसका मिलता है हमें श्योर मैम, श्योर। रिजल्ट। हाँ, बाकी तो और कोई अगर 5 मिनट सभी हमारे पास है, सर का जैसे कहना है, तो कुछ और कोई बोलना चाहे, निशांत जी भी का भी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, निशांत शुक्ला जी भी अगर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, वो भी इस पे काफी काम करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाय मैम। मैम मैं फाल्गुनी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, मैम वट बोलो बोलो। जटा का यूज कैसे करना होता है? इसको सुखा के उसका चूर्ण बनाते हैं। अच्छा, और चूर्ण किसके साथ लेना होता है? चूना आप अपने हिसाब से दे दो, अनुपान प्रकृति अपना के डिसाइड। हिसाब से, हाँ। हाँ, हाँ। अपना अनुपान दे सकते, लेकिन उसका जो उसको तोड़ के लाना रहता है, छाया शुष्क करना है, फिर उसका पाउडर बनाना है, फिर उसको छान के तो फिर उसको देते हैं। 3 से 6 ग्राम देना पड़ता है, उससे कम नहीं दे सकते। कुछ ओके, लोग 12 ग्राम भी देते हैं, मतलब डोज उसकी थोड़ी ज्यादा देते हैं। 3 से 6 ग्राम बीड़ी देना होता है, ओडी? हाँ हाँ, बीड़ी बीड़ी 2 टाइम। ओके 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 हाँ ओके हाँ, ओके। ये ओरली अगर देते हैं यहाँ। कामिनी जी, जी जैसे जी। वट जटा की बात चल रही है सो ना, मच। मेरे हाँ ग्रैंडफादर राजवैद्य थे, ग्वालियर के सिंधिया स्टेट के, उनको अस्थमा था, तो वो अश्वत्थ जटा भस्म की प्रयोग करते थे। प्लीज कोई रिसर्च करे इस पे। जैसे वट में जटा होती हैं, ऐसे पीपल में भी जटाएं होती हैं, कई कई पेड़ों में, उसकी जटा की भस्म वो यूज करते थे। ये एक रिसर्च का टॉपिक नया है, और उनके अलावा मैंने किसी को यूज भी करते नहीं देखा, क्योंकि वो सकोरों में भस्म बनाते थे। सर उस समय मैंने की बात है, नहीं, सर तो मैंने जितेन एमडी 84। में अपने अश्वत्थ जितेन फल अपने चूर्ण पे स्टूडेंट किया। से। मैंने एमडी में अश्वत्थ फल चूर्ण पे किया है, अश्वत्थ के जो मतलब पीपल के जो होते हैं ना फल, उस पे किया है मैंने एमडी में, उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। तो इसका भी हाँ, ट्राई करेंगे सर, तो इस पे अभी नहीं किया हाँ, है अपने अभी। दोनों एक अपने रिसर्च टॉपिक, स्टूडेंट्स नया को, रिसर्च टॉपिक। हाँ अपने स्टूडेंट्स को पीजी थीसिस टॉपिक ये दे देना अभी। जी जी मैम, श्योर श्योर। अच्छा सर ने अच्छा मुझे टॉपिक है, वट जटा हाँ का भी बढ़िया रहा, और ये इसको कंपेरेटिव मैं करवा केवल दूंगा, आखिरी क्योंकि में ऑलरेडी 2 एक्सपर्ट्स का को डाटा तो बुलाना है। चाहता हूँ, इफ यू काइंडली परमिट। मेरी जी सर। रामवीर शर्मा जी और पारुल जोशी जी यदि 5-5 मिनट इस टॉपिक पे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि एक स्त्री रोग, दोनों ही स्त्री रोग के हैं। आदरणीय पारुल जोशी जी, क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट वेबिनार की पोलियो की है हमारी, आज पोलियो डे भी है, तो पोलियो पर हम वेबिनार कर रहे हैं, तो इसीलिए। रामवीर शर्मा जी हैं क्या, भाई जी हैं क्या? हाँ जी भाई जी। प्रणाम प्रणाम, स्वागतम। प्रणाम जी।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर क्लियर। जी, थोड़ा सा गाँव में हूँ इसलिए। बहुत अच्छा 5 मिनट कार्यक्रम आपका था। भी आशीर्वाद ले लें। हाँ, जितेंद्र जी का जो प्रेजेंटेशन था काफी इंफॉर्मेटिव था, और मेरे ख्याल से कोई उन्होंने क्षेत्र छोड़ा नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। इसमें दो चीजें मुझे देखने में आई, डॉक्टर साहब ने जो बताया। एक तो ओलिगोस्पर्मिया में उन्होंने वेरिएशन दिया, तो ओलिगोस्पर्मिया के वेरिएशन से पहले उसका 13 मिलियन उसकी वो कंसंट्रेशन था स्पर्म की। वेरिएशन देने के बाद में 85 मिलियन पर ml हुआ, और उसके बाद में उन्होंने दिया अपने फल ग्रिप, तो उसमें 95 ಇಂಡಿಯನ್ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? तो वेरिएशन देने से 13 से लेकर 85 हुआ, और 85 से 95 हुआ अपने फल ग्रिप की वजह से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो विरेचन दे रहे हैं वो विरेचन हालांकि अनुलोमन का भी काम करता है, जैसे कि हम तम केतु विरेचनम, तो वहां पे अनुलोमन का भी काम करता है, वात का भी अनुलोमन करता है, मगर विरेचन मुख्यतः पित्त का समन करता है, पित्त का शोधन करता है। तो इसका मतलब है ओलिगोस्पर्मिया जो केस था उसके अंदर अपने को विरेचन दिया, तो इसका मतलब पित्त की अधिकता थी, पित्त का ज्यादा समन किया। उसके बाद में फलग्रिप दिया, उसका रिजल्ट अपने 10 मिलियन का गया, और उसका 13 से 85 आया। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जब अपने एजोस्पर्मिया था, तो एजोस्पर्मिया निश्चित ही है, अगर अपने गोनेड्स के अंदर कोई स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा है, एजनेसिस है, वहां पर अपने सेल्स ही नहीं है, जेमेट्स के सेल नहीं है, जर्म सेल ही नहीं है, तो वहां पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्रोतोरोध था। तो स्रोतोरोध में भी उन्होंने वही बात की कि विरेचन दिया, तो निश्चित ही स्रोतो शोधन के लिए शोधन ही है, शोधन चिकित्सा ही स्रोतो शोधन होगी। तो स्रोतो शोधन किया, तो उसके बाद में इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, और जो स्पर्मिया था उसमें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला, कुछ सम स्पर्म सी बने। मगर जब उन्होंने विरेचन के साथ में बाद में उन्होंने यापन बस्ती दी, तो यापन बस्ती के बाद में उसमें स्पर्म की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब उसमें वात की वृद्धि थी, वहां पे यापन बस्ती से वायु का समन हुआ, और पहले अपने विरेचन दिया उससे पित्त का समन, पित्त इतना इन्वॉल्व नहीं था उसमें जितना कि अपने वात इन्वॉल्व। इस तरह से दोषों के अनुसार अपने शुक्र दुष्टि है तो कौन सी दुष्टि है उसकी चिकित्सा अलग देखनी पड़ेगी, और स्रोतो दुष्टि है तो स्रोतो दुष्टि के अंदर स्रोतो शोधन के लिए डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि विरेचन से अनुलोमन भी हो रहा है बात का, और प्लस अपनी यापन वस्ती दे रहे हैं उससे भी बात का अपने समन हो रहा है, तो बात का ही उसमें ज्यादा था। इसी तरह से आमलकी का भी प्रयोग बताया, अश्वगंधा का भी प्रयोग बताया। फिर डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन का अपना अपना रोल हो सकता है, जैसे कि मतलब सौम्यम शुक्रम, तो आमलकी भी वैसा शुक्र है। मगर एक चीज मेरे को समझ में नहीं आई, डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब पिप्पली का प्रयोग करते हैं, पिप्पली क्षार लवण तीनों के तीनों शुक्र नाशक है, अगर उनका प्रयोग करते हैं तो 21 दिन से ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य कहता है। ठीक है, पिप्पली का मधुर विपाक है, मगर वो पिप्पली शुक्र के लिए मना किया है, क्षार और लवण को और पिप्पली को। तो इसमें थोड़ा सा शुक्र शोधन के लिए तो वो स्रोत शोधन के लिए तो कर सकते हैं, मधुर होने की वजह से या फिर तीक्ष्ण उष्ण होने की वजह से, अनुष्ण होने की वजह से शुक्र का शोधन करती है। तो कुल मिला के जो चीज है, एको ब्रह्मम विप्रा बहुधा बदंती, या भी क्रिया भी जानते धातु में। तो कुल मिला के ये है, हमारी जो भी ट्रायल की हम लोगों ने जिस जिस पेशेंट पे अलग अलग पेशेंट को अलग अलग मेडिसिन दी, तो इसका मतलब उनका पॉजिटिव फैक्टर अलग था। एक चीज और जरूर देखेंगे इसमें कि अपने जो शुक्र शोधक शुक्र को दुष्टिकर भाव हैं, शुक्र शोतो दुष्टिकर भाव हैं, उनकी अंदर अपने लाइफ स्टाइल के अंदर चेंज किया, तो लाइफ स्टाइल का ज्यादा रिजल्ट रहा या मेडिसिन का रिजल्ट रहा, इसका भी अपने क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और कुल मिला के इतना है कि हमको जो रिजल्ट मिल रहा है वो सही है, और हम सही लाइन पर चल रहे हैं। मगर मेडिसिन कौन सी ज्यादा प्रयोग कर रही है, क्या काम कर रही है, किस जगह पे काम कर रही है, इसको क्लासिफाइड करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो निश्चित ही शुक्र दोषों के अंदर शोधन चिकित्सा ये समझ। अब डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात की, हमने अच्छी बात की, वट जटा, बटचटा का प्रयोग किया जाता है, मगर एक चीज है हमारे यहाँ लोकल लोग दिया करते हैं, जो स्वप्न दोष होता है और इरेक्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें एक बतासे के अंदर जो बट का दूध होता है, 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, जैसे बट दूध को बतासे के अंदर दिया करते हैं खाली पेट, तो उसका क्यों कसाय रस है, तो इसका मतलब है उसके अंदर स्तंभ, शुक्र स्तंभन के रूप में काम कर सकते हैं। शुक्र स्तंभ जिसको प्रीमेचर इजैकुलेशन हो जाता है,
तो उसके अंदर शायद रिजल्ट मिला होगा। मैंने यूज नहीं किया है, मगर लोग क्या करते हैं उसके ऊपर भी देखा जा सकता है। तो निश्चित ही पंचवल्कल के जो चीजें सारी के सारे कसाय हैं, शीत हैं, तो जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस अगर थर्मल उसकी वजह से हो रहा है, पित्त जहाँ पे अनुबंधित है, वहां पे उनका पंचवल्कल का प्रयोग किया जा सकता है। और पंचवल्कल का जैसे डॉक्टर ने बताया, अश्वत्थ, अश्वत्थ का जो अपने एक्चुअली अश्वत्थ का नाम ही अश्वत्थ को भी उसमें बताया गया है, और उनका फल जो है कसाय रस होने की वजह से उसका प्रयोग किया गया है, तो उसका भी प्रयोग किया। एक डॉक्टर ने बहुत जबरदस्त बात की, उन्होंने एक चीज दी है वहां पर, एक और दिया है निशोत अपने का नाम त्रिवृत अवलेय। तो त्रिवृत अवलेय भी अपने पित्त का समन करता है। तो मुझे लगता है पित्त का समन वहां पर ज्यादा, जहाँ पे छीणा शुक्र है और अपने ओलिगोस्पर्मिया है, एजियोस्पर्मिया है, और ओलिगोस्पर्मिया है, पित्त का अनुबंध ज्यादा है और बाद का अनुबंध कम है। ऐसा मेरे को इस स्टडी से लगा। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, इंफॉर्मेटिव रहा, का सारी चीजें उन्होंने पॉइंट अपने कवर कर लिए हैं। और मुझे लगता है ऐसे वक्ताओं से हम लोगों को कुछ सीखने मिलता है, और नए बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैम ने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास है, हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी है और साइंटिफिक रूप से हम लोगों से ज्यादा साइंटिफिक रूप से इसको प्रेजेंट करेगी। आयुर्वेद का भविष्य, उस दिन बात कर रहे थे ना गोल्डन, तो निश्चित ही ऐसे लोगों की वजह से आयुर्वेद का भविष्य गोल्डन आएगा, और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। Good evening, sir. Hello. मैम Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर मेरा नाम ज्योति है। सर मेरा ये सवाल है कि लीवर को सर क्लीन करने के लिए आयुर्वेद में क्या है जो घर में अवेलेबल हो, इजिली अवेलेबल हो, मतलब नहीं, ऐसे डिटॉक्स तो करने के लिए? आई डोंट थिंक कि पेशेंट को देखे बिना लीवर वगैरह का ऐसा कुछ मेडिसिन देना चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा कोई आयुर्वेद में ऐसा फिक्स मेडिसिन नहीं रहता है कि आप बोलो कि लीवर को क्लीन करने के लिए हम ऐसा नहीं करते। आयुर्वेद में जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर, आई डोंट नो योर बैकग्राउंड, बट जैसे कि हम डिस्कस करें कि अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव फैक्टर, अकॉर्डिंग टू पर्सन, कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है ना। ऐसा हम फिक्स नहीं करते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए पेशेंट, नहीं, हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं, नॉट द ओनली कंडीशन, है ना। तो अगर किसी के लिए है तो या क्लिनिकल हाँ, मैम, my introduction myself Jyotika, and I am a clinical physician full time and also pursuing BAMS, ma'am. PMS from From Odisha. you are pursuing or have completed? Ma'am, pursuing. Yeah, so better to discuss in the concern subject, because My lot many subject. medicines Okay, are ma'am. there, and number of medicines are there for that, right? Yeah. Yeah, Yes, right, yes, ma'am. yes, yes. नमस्ते मैडम। Okay, ma'am. नमस्ते Thank कामिनी you. मैम, मैं सिर्फ हाँ, रमा देवी। नमस्ते जी नमस्ते। मैडम, बोलिए, आइए, स्वागत है आपका। Thank you, ma'am. I'm on the way to Udupi, madam, but I joined late because I have just landed by 9 o'clock. Because Jitendra was my co partner in the syllabus discussion, madam. That's why I joined. I Jitendra, have one doubt, yes, madam. yes. Yeah, Jitendra. Even anybody in the group can clarify my doubt that varicocele patients, madam, usually suggest surgery, but any Ayurvedic management, varicocele patients, madam. Yeah, Jiten will be master of this. He will suggest. Yeah. Jitendra? He left. He left the group, it seems. Might be. Might be. Okay. Yeah. Madam, patients, their surgery, they're suggesting that surgery only, madam, but patients were not ready. Even surgery is the 50-50 chances, no, madam. That's why something to do. I done Virechana for one patient, but still there is no much good result. Anything can be done. Then Rakta Shuddhi, I mean, as per my opinion, Rakta Shuddhi should be there, and Mridhu should be continued in this case. Okay. I think so. Yeah, If Rakta you Shuddhi. kindly Yeah. permit us Yes. to conclude. Okay. Kamini ji,
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि रमा देवी मैडम पूछ रही है, हम उन्हीं के हस्बैंड जो जोनास सर है उनके पास हम भेजते हैं पेशेंट, वो भी मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है ना, तो हम वाह, कभी उनको भी इनवाइट करने हैं, लेकिन वो श्योर थोड़ा श्योर श्योर। आगे आगे का अभी तो प्लान है अभी सीरीज चल मेरा। रही है। हाँ, उनको बुलाना है, थोड़ा बाद में बुलाऊंगी अभी, है ना। तो मेरे प्लान में है। ठीक तो ठीक ठीक। हाँ 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 हाँ, तो बहुत अच्छा सेशन रहा, सबकी ओपिनियन भी रहे, है ना। तो अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं सारा, जो भी मैं सोचा था कि हाँ शुक्र की सीमेन एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा डिस्कस हो, वो भी जितेन ने बता दिया, थैंक्स टू हिम। और उसका एक्सपर्टीज तो है ही है, काफी उसका नाम भी है, काम भी है, तो भी थोड़ा 5-10 साल में थोड़ा थोड़ा पॉलिश हो जाएगा अच्छे से। तो हम